Amid much speculation over will Shubman Gill feature in the mother of all battles versus Pakistan or not, the Maverick opener reached Ahmedabad day before, and yesterday he was seen in the nets. Now, MSK Prasad reckons Gill is ready and will certainly play. What is the truth and the possible scenarios? We'll discuss that and more in this session on India.com. And to do that, we have with us Biswajit Jha, who's an ex-sports editor and an author. We have Kaushik, we have Akshat, we have Sunny, and we also have Deban joining us today on India.com. So without wasting any time, let's get started. So Biswajit, I'll just update you on what exactly transpired. MSK Prasad, former national selector, he made a statement where he reckons, without a doubt, Shubman Gill is going to play against Pakistan. Yeah. Whereas a couple of days back, there were reports that he's going to miss the game against Pakistan. Now, to fan all the rumors, what has exactly happened is Shubman Gill was also seen in the nets yesterday, whereas India did not have a practice session. It was designated for Pakistan to use the stadium. Shubman Gill was the only Indian who went there. He had a net, he had a knock. We saw the pictures of all that on social media. What do you reckon? Can we see Shubman Gill against Pakistan tomorrow? If he can play, that is the best news for India. We shouldn't be worried about that if he plays and if he is fit. We don't know about the exact medical report. If MSK Prasad thinks that he will play, so it is good. Everybody will hope that Gill will play and play well. The kind of form he is in, we need him to play against Pakistan. So it's a good news. I don't think like if he is unfit, then we should be worried. But he is fit, then why we should worry? You are on mute, Ankit. Ankit, you are on mute. So you reckon Shubman Gill is going to play tomorrow because he's been spotted in the nets? What's your hunch, Biswajit? No, no, if he is fit, I don't know about the exact medical report. I don't know about what happens after dengue because I'm not a medical expert. And if players and all the team management and if the doctors feel that he is ready to play, then he will play. I don't have any issue with that. I will welcome him like all the Indian fans. So in the Not match just you, against 1.3 billion others will be welcoming yeah. Shubman Gill for sure. Okay. I just want to reiterate to our viewers. I did this yesterday. Again, today I want to do it. So, guys, during this broadcast, you can support this page by sending stars, a digital gift that helps us earn some money. Yes. So yeah, let's move forward. Kaushik, what is your hunch? You saw how things played out yesterday. The team reached Ahmedabad. Shubman Gill was spotted in the nets. All the talk around Shubman Gill, MSK Prasad's comment, puts the cats among the pigeons. So now what happens? See, I think there is a possibility of Shubman Gill playing against Pakistan tomorrow because if someone has got a dengue, he at least takes 7 to 10 days to recover from the disease, and after that also you have a weak body. You are not fully fit. So and the way Shubman Gill batted yesterday, I mean, spent some time at the nets, and then he also honed his fielding skills. He was there and out in the sun for about more than one an hour and so I think and even Rahul Dravid and Rohit Sharma in the conference also said that he's sick, but they did not say that he had dengue or something else. So I think it was just a merry fever, and as things currently stand, that Shubman Gill practiced yesterday, he will be having a full-fledged training session with the Indian team today. So I think there is a possibility of Gill playing tomorrow against Pakistan. And moreover, the Ahmedabad Stadium is his home ground. He has played 2 IPL seasons there. He knows the in and out of that stadium. Although he hasn't played an ODI at the Ahmedabad Stadium, but the amount of IPL games, Tests, and T20s he has played, so it will be a big bonus for India if Shubman Gill plays tomorrow. Okay, in some time from now, we'll also be having Kapil Vashish joining us. He's been covering the World Cup. He's been closely, watching the Indian team, their movements and everything from Chennai to Delhi, and now he's in Ahmedabad. So I think in some time he'll be joining us. I think he'll be in a better position to, let us know what exactly transpired. Uh, Debayan, because I know you did a story in the morning on this, BCCI should ban the India versus Pakistan match. What is this drama all about?
all about? Can you just explain it to our viewers, Debayon? Yeah, sure. Thing is, Pakistan reached Ahmedabad a day earlier than India on Wednesday, and they, received a thunderous reception from the hotel staff, and there were even female dancers also, welcoming them with open arms. So this kind of irked the Indian fans, and as a result, they've brought in the topic of the Indian army, that the army are at the border, the fighting for the nation. But here we Indians are welcoming the so-called enemy country with open arms. So that is where the boycott trend started, and it's But peaking don't high. we as Deban, but don't we as Indians time and again say Atiti Deva Bhava? So this is like Obviously, double standards, ob- man. This is obviously, so obviously, bizarre. It's a game of cricket. Everybody, the exactly, world is watching India. The world is exactly, watching Ahmedabad. This is not what you do. This is rather strange. But exactly. At the end of the day, war has nothing to do with us. They are cricketers and they're here to play. So that's and the it's an thing. ICC event, not a bilateral tie. Exactly. So these are all social media outrage. This will happen every now and then. We'll just focus on the And match, and this and disappear. that is exactly right. And that is exactly why the other day Rohit Sharma said that, we'll stay away from the social media after we won against Afghanistan. But, easier said than done. We really understand Rohit Sharma's position. Kaushik, what do you have to say about the Shubman Gill scenario and also what has transpired in between over here? Kaushik. See, the Sorry, social. I didn't get you. Actually, your voice is not audible, Ankit. Okay. Yeah. Kaushik, please continue. Deban, I'll come back to you in some time. I see. I'll talk about the social media trend first. As Devan clearly said that sports and politics, these are two different parts, and they do not correlate. So I think sports should be kept aside from politics, and whatever the trend that has started on social media from the morning, I think it's very fake and vague, and it's just that you need to gain some followers, you need to gain some likes, you need to have some social media following things, and that's the only reason I think that these guys have started this boycott thing and I also feel that some of the well-known people in this country, in our country, also take a part in this boycott thing just to gain some followers, just to gain some negative comments, just to advertise themselves for free in the country. So I think this should not Everybody, be Kaushik, everybody wants a piece of the cake over here, is what I exact. understand. Exactly. But yes, you earn the piece of the cake. You want the piece of the cake. Do it in a good way, not in a negative way. Do it in a positive way. Support the Indian team. Support cricket. Support the World Cup that is happening in our country for the first time independently. India is hosting the World Cup for the first time in history independently. So support that. Go to the stadium. Support the Indian team. Support the other teams. I mean, we have seen several non-India matches that were the galleries were empty, so support cricket, support those teams. So I think this is completely irrelevant in terms of India and Pakistan, in terms of cricket, in terms of ICC World Cup, and I think these people should support the India, support the Indian team, support the World Cup, support the game of cricket in a very positive way. And as you asked about Shubman Gill, I already said that Shubman Gill might play tomorrow, and that will be a big plus for India. And let's see, hope for the best. Like Kaushik pointed out that this is a social media gimmick. People are just trying to get a piece of the cake, milk the occasion and all of that. सनी आपको क्या लगता है ये तो होना जायज है? ऐसा तो नहीं है कि ये पहला बार हो रहा है. इंडिया पाकिस्तान मैच से तो ब्रॉडकास्टर्स भी पूरा कमाना चाहते हैं. मैच को जैसे तैसे संडे को फिक्स किया जाता है इंडिया पाकिस्तान, तो इसमें कोई गुना तो नहीं है. द ओनली थिंग दैट कौशिक यहाँ पर बोलना चाहता है कि ये सब ऐसे हिंसा मत फैलाओ, राइट? सनी आपको क्या कहना है? सी अंकित, अगर यहाँ पर ये क्रिकेट बचा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है. सबसे पहली चीज, एक तरफ हम आर्मी की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीसीसीआई भी तो गया था एशिया कप के लिए पाकिस्तान.
और अगर इंडियन टीम किसी और कंट्री के अंदर जाती है, उसे ऐसा वेलकम नहीं मिलता, तो क्या बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को दोबारा उसके अंदर भेजेगी, उस देश के अंदर खेलने के लिए? सबसे पहली चीज तो ये। एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये, प्लेयर्स की सिक्योरिटी की बात होती है। दोनों टीम क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा पागल है और क्रिकेट को दोनों देशों के अंदर पूजा जाता है। दोनों, इधर विराट कोहली को पूजा जाता है, उधर बाबर आजम को पूजा जाता है। अगर यहाँ पे इंडियन फैन विराट बाबर आजम के साथ गलत बिहेवियर कोई भी रखेगा बीसीसीआई हो एज अ होस्ट नेशन, तो क्या ये शोभा देगा बीसीसीआई को कि सबको एक अलग अलग वेलकम मिल रहा है और पाकिस्तान को एक अलग वेलकम मिल रहा है? तो ये बहुत ही, मतलब ये बहुत ही ज्यादा खराब टॉपिक है। और इंडिया के अंदर आजकल बॉयकॉट ट्रेंड आप देखोगे, हर चीज को लेके चल गया। कोई मूवी आती है, मूवी का ट्रेंड अलग होता है, एक बॉयकॉट गैंग अलग होती है। तो ये बॉयकॉट गैंग अब मूवी से आपने तो क्रिकेट सनी सनी तुमने तो वो स्टोरी भी किया था कि जैनब अब्बास हैड टू लीव द कंट्री। शी इज एन एमिनेंट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, शी हैड टू लीव द कंट्री, राइट? एग्जैक्टली। तो ये बॉयकॉट ट्रेंड इतना ज्यादा चल गया है पिछले 4-5 सालों से। आप देखोगे, मुझे ये देख के मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब स्पोर्ट्स के अंदर भी आता जा रहा है। अभी आप बॉयकॉट क्रिकेट को होते हुए देखोगे, थोड़े टाइम में रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, तो रेसलर्स को आप बॉयकॉट होते हुए देख रहे थे। मूवीज बॉयकॉट हो रही हैं। मतलब वी आर गोइंग इन अ वेरी बैड डायरेक्शन। ऐसा सब कुछ बॉयकॉट करते 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 थोड़े टाइम में कुछ लोग ऐसे भी हो जाएंगे कि आपस में एक दूसरे से बॉयकॉट, और तो दिस इज रॉन्ग। और शुभमन गिल की, दिस अंकित आप इज बात कर रहे थे कि शुभमन गिल ने कल बैटिंग करी, नेट्स में बहुत टाइम स्पेंड करा। इससे पहले आपने एशियन गेम्स से पहले जो बायलैटरल सीरीज थी, उससे पहले हमने केएल राहुल को सेम करते हुए देखा था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैटिंग करना नेट्स में, 2-3 घंटा नेट्स पे बिताना, और 100 ओवर फील्ड के अंदर खड़े होने में ना बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो शुभमान गिल ने अपना स्टार्ट करा है प्रैक्टिसिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए दिख जाएंगे। पाकिस्तान वाला मैच अगर हम जीत जाते हैं, जीतेंगे ही पाकिस्तान वाला मैच, इंडिया ही जीतेगा। अगर शुभमन गिल के बिना भी जीतते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आगे बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। सेमीफाइनल में जाने के बाद इंडिया कहीं ना कहीं मैच हारती है, वहां पे हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो राइट शुभमन राइट गिल राइट। अगर शुभमन गिल को आप बैटिंग के अंदर देख रहे हो, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी निकल के आती हैं। फिर ईशान किशन की बात आती है, और दूसरा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की अगर आप बात करोगे, श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव भी है। अगर शुभमन गिल आते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, तो श्रेयस हट के सूर्य कुमार यादव को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल पिच पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे, रोहित शुभमन अच्छी खासी पार्टनरशिप करेंगे। और उसके बाद आप देखोगे सूर्य कुमार यादव एज अ फिनिशर हमें हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इंस्टेड ऑफ श्रेयस अय्यर। पर Right, शुभमन right. गिल आई Akshat, I थिंक, want, right, right. I got your point, Sunny. What you want to you what? But I didn't get a lot of clarity about Surya Kumar Yadav. ये सूर्या कुमार यादव का क्या हिसाब किताब है? वो कैसे करके श्रेयस अय्यर की जगह लेने वाले हैं? श्रेयस अय्यर की जगह वो ऐसे लेंगे, अगर शुभमान गिल और रोहित शर्मा ओपन करने आते हैं, उसके बाद अपने पास विराट कोहली है, उसके बाद अपने पास केएल राहुल है। विराट कोहली और केएल राहुल एक लंबी इनिंग खेल सकते हैं। शुभमन गिल द काइंड ऑफ फॉर्म शुभमन गिल इज इन, नहीं नहीं, ये शुभमन तो गिल ने तुम्हें लगता है सनी, बट व्हाई विल सूर्या कुमार यादव come in place of Shreyas Iyer over अंकित here? अंकित Why do you अंकित suddenly लेसन, want to अंकित disturb that लेसन, number अंकित 4 slot? अंकित 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 लेसन, सुनो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमें एक हार्ड हिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारी स्टार्टिंग की बैटिंग बहुत अच्छी जाती है, 30-40 ओवर विराट कोहली तक, हमारा विराट कोहली केएल राहुल तक टिक जाता है, तो उसके बाद वी नीड अ प्लेयर लाइक सूर्य कुमार यादव, जो आएगा गेम को अच्छे से, एक अच्छा फिनिश करेगा गेम को, हार्दिक पांड्या की तरह। तो दैट वाज माय पॉइंट। I got your point, Sunny. Moving on, Akshat, I would like to ask you: do you agree with Sunny when he says that Surya Kumar Yadav could be used in the lower middle order, maybe where he comes in as the big hitter in the back end of the innings? But again, my counter question to that is: there is already a Hardik Pandya there. Why would you actually need Surya Kumar Yadav? Because one, that does not send the right signal to Shreyas Iyer. What do you have to say about that, Akshat? Thank you so much, Ankit. See, I would tell that really we are having Hardik Pandya and Ravindra Jadeja. Both we are having who can bat and who can take on the innings in the end. And I think there is right now we should not have Surya Kumar Yadav instead of Shreyas Iyer. As we all know, if the top order collapse, we have to see both point of views. If our top order collapses, Yeah, you are absolutely right, Akshat. You're Because audible, yeah, yeah, Akshat, say it again. right yeah. right right now, yeah, So right if right our now, top order, right, yeah, yeah, if our top order Shreyas collapses, Iyer is not playing that badly. If Shreyas Iyer plays badly, doesn't get run in 3-4 matches,
then we can think of Surya Kumar Yadav definitely, but Yeah, not right obviously, now. and because yeah, and obviously, if we see if we talk about the situations going ahead, if our top order collapses, then बस definitely we need someone who can take on the दोनों innings आंसर बोले ahead. And we know that Shreyas Iyer is a tactical player. He can take on the innings. He can play on the Yeah, innings. exactly. He can And Shreyas defense. He Iyer is can play also drive. He Where's can he is make also perfect a innings. hard hitting player. Yeah, नीचे नीचे He both is of them no, also are a no. hard having. hitter. Yeah. So what I Okay, think we is have Shreyas okay, Iyer. okay, Yeah. okay. Akshat. I'll just Yeah. hold you, ask you to hold yourself for a minute. I'll come back to you for sure. It's a very interesting topic that we are speaking about. Thank you so much for joining me in this session, Kapil. So Kapil has been covering the Indian team. He's been traveling with the team. He knows much more than what we do about what's exactly happening inside the Indian camp. Straight away, without wasting any time, let's get the elephant out of the room, Kapil. I want to ask you, what is Shubman Gill के साथ? What is the scenario right now? सुबह सुबह एमएसके प्रसाद का एक बयान आया where एमएसके प्रसाद sounded so confident that Shubman Gill is surely going to play against Pakistan. और इस चीज को और मतलब यकीन में बदलने के लिए there were a few pictures that came out yesterday on social media. I think I shared a couple with you also. So आपको क्या लगता है, आपके पास इनपुट होगा शुभमान गिल कल खेल रहे हैं कि नहीं? What is it, Kapil? देखिए आज शाम तक सब कुछ तस्वीर साफ हो जानी चाहिए मुझे लगता है। भारतीय टीम को शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचना है प्रैक्टिस करने के लिए। शुभमन गिल टीम के साथ आएंगे, ये आप तय मान सकते हैं। उसके बाद कप्तान या कोच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे तो उनसे ये सवाल भी निश्चित तौर पर किया जाएगा कि क्या शुभमन गिल फिट है, क्या वो अवेलेबल है इस मैच के लिए। तो कल जिस तरीके से उन्होंने अभ्यास किया, क्लोज टू 50 मिनट्स उन्होंने बैटिंग करी, हालांकि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज नहीं थे उनको गेंदबाजी करने के लिए, उस तरह से उनको थ्रो डाउन भी अच्छे से नहीं मिल पाया क्योंकि पूरी टीम कल ही पहुंची है, जबकि शुभमन गिल परसों ही पहुंच गए थे। तो कल सुबह 11 बजे जब उन्होंने अभ्यास किया, मैं आपको बताऊं अहमदाबाद का टेम्परेचर 30-32 डिग्री के आसपास था, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, धूप इतनी तेज पड़ रही है कि वो जो 30-32 डिग्री है वो दिल्ली का आप समझ लीजिए 42-44 डिग्री के आसपास का फील होता है। तो उस गर्मी में अगर शुभमन गिल ने क्लोज टू 1 आवर प्रैक्टिस करी है तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट कर रही है और वो अच्छा फील कर रहे हैं, तभी वो 1 घंटा प्रैक्टिस कर पाए। तो अगर उनकी बॉडी इस प्रैक्टिस के बाद भी रिचार्ज है तो वो कैसा बिहेव कर रही है ये हमको पता चलेगा। और युवराज सिंह का जो बयान है मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनको बचपन से जानते हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने उनको बताया है कैसे आपको अपने खेल में सुधार लेके आना है, क्लोजली देखा है। युवराज सिंह का ये कहना कि शुभमन गिल को मैंने बोला है कि मैंने डेंगू में क्रिकेट खेला, मैंने कैंसर में क्रिकेट खेला है, आप जाओ ये मैच खेलो, ये उनको बहुत मुझे लगता है कि वर्कअप करने वाला है और वो एक बड़ी उम्मीद की किरण है कि शायद वो खेल जाएंगे। जी कपिल, इफ आई आस्क यू फॉर परसेंटेजेस, आपका हंच क्या है? 80% लग रहा है शुभमान गिल खेलेंगे, 70% लग रहा है शुभमान गिल खेलेंगे। व्हाट इज योर हंच? और जब कल वो खेल रहे थे आपने जरूर उनको करीब से देखा होगा, हाउ वाज ही मूविंग इन द फील्ड? कुछ भी तकलीफ आपको देखने को मिला? जैसे कि वाज ही देखिए गेटिंग मैं आपको टायर्ड, बताऊं, सांस फूल रहा था, व्हाट जी वाज इट? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि सिर्फ उन्होंने बैटिंग का ही अभ्यास किया था और कोई उन्होंने ड्रिल नहीं किए। और जो अहमदाबाद के लोकल नेट बॉलर थे उनको फेस किया था, तो जाहिर है कि वो उतना तेज गति के नहीं थे और उतने जैसा वो फील करना चाहते होंगे जितनी तेज गति की बॉलिंग वैसा उनको प्रैक्टिस नहीं मिल पाया होगा, ये बात सही है। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि बस जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, ऐसा भी नहीं था। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि इस तपती गर्मी में 1 घंटा खेलने के बाद अगर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और आज शाम को भी वो टीम के साथ आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक 60-40 का चांस है उनके खेलने की। Chances, Biswajit, what I understand after speaking with Kapil over here is that we cannot totally rule him out. There are high possibilities that we could see Shubman Gill open the batting with Rohit Sharma tomorrow. What do you have to say about that, Biswajit? After hearing Yeah, yeah, Kapil, what is your hunch now? yeah. What I have got the information and what I have listened from Kapil also, that Gill may play, like 60-70% chances are there, but you can't say right now that he will play definitely, because I think that in the press conference also, like knowing the Indian team management, in the press conference at 6 p.m. also, what Kapil is expecting
that they will also be little bit vague. That tomorrow morning we'll assess the situation and then we will see what will happen. Correct. Good, You're right. like knowing This is knowing the experience. Indian team. ये Yes, this is my तजुर्बा है, ये experience. तजुर्बा है, ये तजुर्बा है. So they will keep Pakistan guessing and keep the fan guessing also. I think we have to wait till tomorrow 10-11. Then they will disclose it. But you know, Biswajit, as Kapil said very rightly, Kapil said, आज अगर शाम को Shubman Gill travels with the team to the ground and he goes out there, has a net, body is feeling good. He had a net for about an hour, kal, as in yesterday, takti dhoop mein. So today also, if he goes out there, has a bat, I think Yeah, it's yeah. more or less understood that he's going to play tomorrow. है ना हाँ Kapil? हाँ, Am I wrong यहाँ पर? डेफिनेटली You're आज right. आज 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 एकदम ग्रोलिंग प्रैक्टिस कर ले शाम को, तो हो सकता है कि कल फिट हो जाए। और पाकिस्तान गेम है तो जैसे युवराज सिंह ने भी बताया जो भाई करना है कुछ, मतलब क्योंकि इमोशनल फैक्टर भी है। But और you know, ये काफी तगड़ा माइंड गेम खेला जा सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कपिल, मैं आपको बताता हूँ कैसे। You know that शुभमान गिल प्रैक्टिस कर रहा है, he is fit, he is in a good shape, but शाहीन अफरीदी को ये चीज पता नहीं है और रोहित नहीं चाहेंगे कि शाहीन अफरीदी prepares for शुभमान गिल। रोहित चाहेंगे शाहीन अफरीदी prepares for ईशान किशन, the left-hander. So a lot of mind games could be played today evening. So yes, it's brewing up pretty well. Kaushik, I saw your hand go up. आपको कुछ बोलना है Kaushik? You want to put in a word? Yes, no, I just wanted to say that Shubman Gill. I mean, from a player's perspective, I just feel that Shubman Gill will be very hungry to play tomorrow. I mean, he will give his 100%, and after those words from Yuvraj Singh, मैं डेंगू पे भी क्रिकेट खेला है, मैं कैंसर पे भी वर्ल्ड कप खेला है. So those things will make him more confident, and it made him more hungrier to play against Pakistan, because against Pakistan it is one of a what to say, it's a life dream, and one of a kind of a games that everyone wants to be a part of it. So I think Shubman Gill will give his 100%, more than 100% to play tomorrow. I think Kapil has to say something. Kapil, I think you have a point. नहीं, Please go ahead. यस आई वाज जस्ट हेडिंग कि जो बल्लेबाज पिछले 4 मैचों में 2 शतक और अर्धशतक बना के बैठा हो, बॉल बहुत बढ़िया तरीके से उनके बल्ले पे आ रही हो, वो चाहेगा, उसके लिए ऐसा लगेगा जैसे कल हिंदी का पेपर है, सब कुछ आता है, जाओ जाके बस छाप देना है एग्जाम। तो ऐसा वाला फीलिंग रहता है बैट्समैन के लिए। तो ही वुड सर्टेनली वुड लव टू गो आउट देयर एंड प्ले। और एक माइंड गेम शाहीन शाह अफरीदी में भी चला। कल रात को हम स्टेडियम में थे, पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो जब वो लोग सारे प्लेयर जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस, तो मैंने पूछा शाहीन शाह अफरीदी को कि कैसी तैयारी है फिर इंडिया के अगेंस्ट आपकी। और कुछ फोटोग्राफर भी प्रिंट के खड़े थे वहां पर, उन्होंने शाहिद को बोला कि शाहीन भाई एक फोटो हो जाए जरा आपके साथ। तो वो बोले फोटो खिंचवाऊंगा लेकिन इंडिया के 5 विकेट लेने के बाद। तो अब ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है या बड़बोलापन है या माइंड गेम है, जो भी आप इसको कहना चाहें, बट जी। लेकिन कपिल लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, जो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है एशिया कप में और फर्स्ट मैच में भी श्रीलंका, उतना बड़ा कुछ है नहीं, तो उसके ये भी इंडिया के पास बेस्ट चांस है। प्लस शुभमन गिल भी मतलब एक्साइटेड होंगे कि भाई ये पाकिस्तान जो है, स्पेशली उसका जो स्पिन बॉलिंग कंडीशन है, शाहीन शाह अफरीदी अकेली है जो मतलब ठीक ठाक बॉलर है, बाकी कोई भी अच्छा बॉलर नहीं है। स्पेशली जो स्पिनर्स उसका सदाब और ये जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बहुत ही बेकार है। तो मतलब थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो शुभमन गिल चाहेगा जी इस मैच खेल ही ले। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से आप देखिए जी, कैरी ऑन कैरी। जैसे शाहीन का जो स्टेटमेंट था कि मैं पिक्चर खिंचाऊंगा 5 विकेट के बाद, इंडिया का 5 बैट्समैन आउट करने के बाद, आई थिंक दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। I think this kind of overconfidence will destroy Pakistan. This is what I feel personally. Kapil. नो मैं बस यही बोल रहा था कि जिस तरीके से इंडिया की टीम ने 2 मैच खेले, 4 पॉइंट लिए, 2 जीत ली, दोनों बार चेस किया। पाकिस्तान ने 2 पॉइंट लिए, 2 खेले, दोनों बार चेस किया, तो दोनों टीमें चेस करते हुए जीती। तो कल किसी एक को डिफेंड करना होगा। और जो हमने व्यू देखा मैदान में अराउंड 8:39 हम वहां पर थे, तो हाथ रगड़ने के बाद बहुत देर तक भी बहुत थोड़ा सा गीला हो रहा। तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा फैक्टर होगा, बट नो कैप्टन वुड लाइक
कि आपके गेंदबाजों को Yes. बॉल थोड़ा भारी हो जाए, रिवर्स स्विंग नहीं होगा, स्पिनर को दिक्कत आएगा, लेकिन दे ऑलवेज से बैट फर्स्ट इन ए प्रेशर मैच. तो Yeah, दैट्स yeah. कैच 22 ये व्हाट ये विल कैप्टन. ये ट्रिकी सिचुएशन है कपिल, क्योंकि एक साइड में आपको ड्यू भी देखना पड़ेगा, एक साइड में आप Exactly. प्रेशर सिचुएशन में Exactly. सेकंड इनिंग्स बैट Correct. करना ऑलवेज डिफिकल्ट है. Correct. Thank you so You're much, right. guys. Thank you so much for joining me in this session on India.com. We got a fair idea as to what to expect in the curious case of Shubman Gill right now. सब कुछ लगभग शाम तक थोड़ा बहुत हमें clarity मिल जाएगा is what we understood. And yes, it seems like Dew is also not going to play a massive role at the venue. Thank you so much for joining me in this session on India.com. Please stay tuned with us for all the latest across sports, and we'll keep our special spotlight on the World Cup. Thank you so much for joining Thank me. you. Thank you, guys. Thank you. Bye Thank you. bye. Thank you.